ریکارڈنگ پہ بھی آن کر دیتا ہوں. طارق bhai is muted, so طارق بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں میں پروگرام کو شروع کرتا ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ بالکل آ رہی ہے جی. ہم اس پروگرام کا آغاز سب سے پہلے تلاوت سے کریں گے. ہمارا ایک چھوٹا بیٹا یہاں پہ ریان، آپ پلیز آپ آ جائیے مائک کے اوپر اور تلاوت سے اس کا آغاز کیجیے. پھر طارق کیانی صاحب اس کو آغاز کریں گے. ریان guys just give me 1 minute. ہما بڑی دنوں بعد تمہاری شکل نظر آئی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر بابرا. وعلیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بس 1 سیکنڈ چیک کرنے دیں کہ لائیو ہو گیا ہے یا نہیں. میں آپ کے پیج کے اوپر ہوں. It's showing that it's live. اوکے. ریان ریان come. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جزاک اللہ. جزاک اللہ. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ جن کے میوٹ نہیں ہے مائک وہ میوٹ کر لیں. اپنی ٹرن کے اوپر پلیز ان میوٹ کر لیجیے گا. بہت شکریہ. کیونکہ یہ لائیو اسکرین شیئر ہو رہی ہے تو پھر آپ کی اسکرین شیئر ہو جائے گی اگر وہ تھوڑی سی بھی انٹرپشن ہوئی. جی طارق کیانی صاحب. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے جی بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ سب لوگوں کا جو آج ہمارے ساتھ اس سیمینار میں جوائن کر رہے ہیں. اس سیمینار کا مقصد ڈیفینیٹلی کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کے حوالے سے ہے، مگر ہم نے جو ٹاپک چوز کیا تھا وہ تھا کانفلکٹ ان ساؤتھ ایشیا اینڈ اٹس امپیکٹ آن ریجنل پراسپیرٹی. تو اس حوالے سے ہم نے اس سیمینار کا آغاز کیا. میں کینیڈین مسلم میڈیا کلب کی طرف سے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج کی شام. اور ہمارے ساتھ جو مین آرگنائزیشنز ہیں جڑی ہیں اس میں پاکستان کینیڈا ایسوسی ایشن سے ہارون خان صاحب ہیں. ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں سیف پنو صاحب بھی میرے خیال میں شریک ہونے والے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ PCCA پاکستان کینیڈین کلچرل ایسوسی ایشن سے وقار فاروق خان صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں وہ تشریف لائے ہیں. ہمارے ساتھ PC کمیونٹی ایسوسی ایشن سے ان کے پریزیڈنٹ خالد چوہان صاحب ہیں.
ہماری ویمن سوسائٹی کی ڈاکٹر بابرا اور رابعہ دستگیر اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. ہماری اردو ایسوسیشن سے ہما شعیب صاحبہ تشریف لائی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ جی, بہت شکریہ. اور ہمارے آج کے چیف گیسٹ ہمارے آنریبل کونسل جنرل ان پاکستان ان وینکوور جہازیب خان صاحب. تھینک یو. جہاں خان صاحب, سوری سر, معذرت, تشریف لائے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے اپنے ٹائم سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم سارے مل کے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے اس وقت ساؤتھ ایشیا کی پراسپیرٹی کے حوالے سے. یہ صرف ایک کانفلکٹ نہیں ہے کشمیر کا, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو انڈیا خاص طور پہ ہمارے پاس اس وقت ایک ایسی پاور کی شکل میں ہے جس نے بہت سارے کانفلکٹس کو پیدا کیا ہے اپنے بارڈر پہ, چاہے وہ چائنا کے ساتھ ہو, بھوٹان کے ساتھ ہو یا پاکستان کے ساتھ ہو. تو اس کے علاوہ بھی اس کا کسی بھی اپنے نیبر کے ساتھ کوئی اچھا ریلیشن نہیں ہے. آج میں ایک سوال اپنے سارے شرکاء کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ وہ یہ بھی اس بات پہ بھی اظہار خیال کرے کہ ان کانفلکٹس جو جتنے بھی ہیں ان کا سلوشن وہ کس چیز میں دیکھتے ہیں. ہیومن رائٹس کا جہاں تک پرابلم ہے کشمیر کے اندر, خاص طور پہ جو 370 ریووک ہوا اگست میں, اب اس کو 550 دن ہو چکے ہیں, جس کے بعد بہت بری پوزیشن ہے اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں. اس کے بعد وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز لانے کے لیے انڈین گورنمنٹ بہت اگریسولی کام کر رہی ہے. آخری اطلاع کے مطابق تقریباً 18 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو وہاں کا ڈومیسائل دے دیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جیسے گورکھا یونٹ کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کو وہاں پہ وہ لا رہے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں سے, لوکل لوگوں سے لڑ بھی سکیں اور وہاں پہ رہ کے وہاں بھی جو ڈیموگرافک جو صورتحال ہے اس کو بھی وہ چینج کریں گے. بہت ساری چیزیں ہیں. ان یہ جو کانفلکٹس ہیں ان کو کیسے ریزالو کرنا چاہیے اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے. مگر میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے پریزیڈنٹ جناب نوید وڑائچ صاحب اپنے مہمانوں کا بھی خوش آمدید کہیں گے اور اس ڈیبیٹ کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے. نوید وڑائچ صاحب پلیز آپ آئیے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر, کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر. کونسل جنرل آف پاکستان, آنریبل چیف گیسٹ مسٹر جہاں خان صاحب, leaders of Pakistani community living in BC, all the media houses and dignitaries, Assalamu alaikum, and welcome to the online seminar hosted by Canadian Muslim Media Club. My name is Naveed Waraich, and I am the president of the CMMC. And on behalf of our media representative team, I would like to thank all the participants for sparing some very valuable time and you joined this dialogue for conflict in South Asia, and in particular to express solidarity with our Kashmiri brothers and sisters. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا, ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں. February 5th is marked as a Kashmir Solidarity Day in Pakistan. I'm sure we will hear from the participants about the significance of this day, but as the representative of CMMC, I would like to emphasize the responsibility we carry on our shoulders to educate people living in British Columbia, to lobby and become the voice of the victims of oppression of the Indian government in the occupied Kashmir. Prime Minister of Pakistan's speech in UN Assembly last year summed up the issue in Kashmir, and as a Muslim brothers and sisters, we as a Pakistani living in the province of British Columbia are standing with Kashmiris for the peaceful resolution of the Kashmir issue as per UN Council Resolution 39 adopted on January the 20th, 1948. We as a in particular and from all walks of life in general must emphasize at all venues that Muslims around the world are peace lovers and
the oppressors who do not belong to a particular religion or the one who must be tagged as a terrorist. Alhamdulillah, Pakistan has been fighting against the terrorism and have paid heavy price in doing so by losing thousands of lives and billions of dollars. Pakistani army and all levels of government must be congratulated for the continued success against terrorism in Pakistan. अब मैं आप सबको वेलकम करता हूं इसके हमारे इस सेमिनार में और सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटे सा रूल ये रख देता हूं क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा हैं. आप प्लीज प्रिसाइज रहिएगा अपनी अपनी स्पीचेस में. हम चाहेंगे कि हर एक को मौका मिले. हम चाहेंगे कि हर एक अपने जो ख्यालात हैं उनको उनका इजहार यहाँ इस फोरम में करें और आपको हक हासिल है, लेकिन प्लीज आप हमारे इन रूल्स के साथ रहिएगा. अगर आप ओवर 5 मिनट्स पे चले तो हमें इसको इस कन्वर्सेशन को वहाँ पे बड़े ही एहतरामन कट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम की जो है वो बड़ी किल्लत है और सभी के अपने अपने टाइम्स हैं. हमें इस विद इन आवर हम इसको वाइंड अप कर जाएंगे. सबसे पहले मैं दावत दूंगा पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैफ पन्नू साहब, अगर वो यहाँ पे तशरीफ रखते हैं. अगर वो यहाँ पे नहीं है तो मैं उनके एक्स प्रेसिडेंट हारून खान को इनवाइट करूंगा कि वो आके अपने कुछ ख्यालात का इजहार करें. If Saif Pannu is there, please he can welcome, and followed by Haroon Khan. Saif is online. He's online. I think he's on mute, but जी सैफ भाई अगर ऑन म्यूट हैं तो फिर आप पहले सैफ भाई को हम मौका देंगे, उसके बाद फिर हारून भाई अपने ख्यालात का इजहार करें. no प्लीज. problem. जी आप हारून this you have the mic now. Haroon, you can. Sure, no problem. Thank you, Naveed Bhai. Assalamu alaikum, everyone. Consul General Saab Khan Saab, and very nice to meet you in this setting. I would love to have met you personally, but great to see you in this very important forum on showing our solidarity with our brothers and sisters in occupied Kashmir. It's unfortunately a very difficult situation for them, and has been since the partition. But it's gotten worse. The lockdown that they're under is cruel and inhumane, and we've come together in rallies, we've come together in forums, we've delivered many notes and postcards to our Prime Minister of Canada, and people all over the world are showing their disgust with the treatment of the Kashmiri, yet the situation is not changing. And now I see an opportunity to join in solidarity with this farmers movement in India, that they are being persecuted as well and being treated in a very unfair manner. And so I think it's a good time to align ourselves with those groups to raise, to take common cause. Your voice is cutting. Yeah. Okay. So if you can hear me a bit better now, sorry. Yeah, we I'm can in a hear him car. better. Okay, Yes, great. go ahead. So essentially joining in common cause with people who are like-minded, and creating a broad coalition of people from all walks of life, from all people. Ultimately, this situation requires many hands to right this really grievous wrong. And we've seen every year, yes, February 5th, we have the Solidarity Day, and we can say, sing the songs and chant the slogans, but ultimately the words are empty without any meaningful result. So we're all peace-loving people, Naveed Bhai, as you had stated, but where there is no justice, there is no peace. And when our people, our brothers and sisters, are being persecuted, it's an insult, it's an atrocity on the human spirit, and it's something that we all need to come together to right this wrong. And lobbying our politicians, talking about it openly,
taking part in these public events, and of course, coming together with the media. So I thank this whole media group, this coalition of our great people in journalism and broadcast for getting the word out. That's an important thing. So let's keep up that pressure, and let's make this evening an opportunity for all of us to really just exchange our ideas together, and hopefully find a solution or some way that we can play a part to change the situation. I see Brother Sajid, who came back from Pakistan recently, and they're on the streets and on 72 and Scott Road, where the Indian farmer. That's a good progress right there. And let's look at ways where we can all come together publicly, because it's one thing talking about this within our own circle. If we're just talking with our, we're all saying the right words, we're all saying the right thing, but what is really actually happening? So let's work together in a concentrated effort to engender some real change. So thank you, everyone. Jazakallah Karen, and Saf, if you're on, we'd like to hear from you. Thank you. Saf, please go ahead. Saf, please आ जाइए. Your mic is off, Saf. Your mic. Saf bhai, your mic is not working properly. Okay, can someone talk to Saf so Saf can unmute the mic? Can we unmute the mic from here, Haris? His mic is unmuted, but Saf bhai, can you hear us? आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, Saf bhai? चलें सैफ भाई, जब तक ऑनलाइन होते हैं हम दावत देंगे. हमारे साथ पाकिस्तानी कैनेडियन कल्चर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वकार फारूक खान साहब भी जुड़े हुए हैं. हम उनसे सुनते हैं कि वो इस पूरे सिनेरियो को कैसे समर अप करते हैं. तो वकार फारूक खान, अगर आप यहाँ पे हैं तो प्लीज आप आ जाइए. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुस्लिम मीडिया क्लब का कि उन्होंने आज के एक अहम दिन पे जो है इस प्रोग्राम को तरतीब दिया और हम सबको अपने ख्याल का इजहार करने का मौका दिया. और मैं इसमें जाबाज खान साहब को, हमारे ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूट को वेलकम करता हूँ. उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज की महफिल की सदारत उन्होंने कबूल की. अल्फाज तो नहीं है हमारे पास कुछ कहने के लिए, क्योंकि इस पे अब से नहीं कितनी दहाइयों से बात हो रही है, कोशिशें हो रही हैं और कोई उसका वाज़ेह हल सामने नहीं आ रहा. तो बजाय इसके कि मैं कुछ इज़हार ख्याल करूं पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, सोशली और लीगल पर्सपेक्टिव से, जैसे कि आपने जिक्र किया कि वहाँ पर इंडिया में जो आर्टिकल उन्हें रिवोक कर लिया, उस पर इज़हार ख्याल के लिए मेरा ख्याल है सबसे हमारे पास जो अच्छी सोर्स है वो जाबाज खान साहब हैं. वो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी बताएंगे, फॉरेन पॉलिसी के मुतालिक बताएंगे. तो उसको समझने के बाद शायद हम कुछ अपना ओपिनियन उस पर बना सकें कि वो हायर लेवल पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमें तो ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन है. तो हायर लेवल पे कौन से ऐसे डिप्लोमेटिकल ऑब्स्टिकल्स हैं जो आज इतने सालों से कश्मीर का मसला हल नहीं हो पा रहा. तो चूंकि वक्त आपने बताया बहुत शॉर्ट है और मैं इस बात को समझता हूँ कि तमाम इस वक्त 20 तकरीबन पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इसमें हैं और सब ने कुछ न कुछ कहना है. तो आपने एक अच्छी इब्तिदा की नवीद भाई, आपने कुछ अशार पढ़े. तो मुझे हबीब जालिब की एक नज़म थी जो बहुत अरसे पहले जब वियतनाम जल रहा था कश्मीर की तरह, तो उन्होंने लिखी थी वियतनाम के ऊपर. तो वो मैं सब उसमें से वियतनाम को तब्दील करके कश्मीर करके आप सब लोगों को सुनाना चाहता हूँ. ना सिर्फ ये कि आप लोग सुनेंगे, जो हमारे फेसबुक पे लाइव ऑडियंस देख रही है वो भी सुनेंगी, और मेरा ख्याल है ये हम सब की आवाज़ होगी. तो नज़म कुछ इस तरह है कि दुनिया के हक परस्तों
खामोश क्यों हो बोलो, खतरे में आज फिर से इंसान की बका है, कश्मीर जल रहा है। ये आग बढ़ते बढ़ते तुम तक भी आ न जाए, बारूद का ये बादल सुबहों पे छा न जाए। दुनिया में रहने वालों, इंसान बन के सोचो, तहजीब की सदा है, कश्मीर जल रहा है। इंसानियत की दुश्मन ये साम्राज्य टोली, खेलेगी और कब तक उनसे हमारे होली। गर अमन चाहते हो, जालिम का हाथ रोको, एक हश्र की फजा है, कश्मीर जल रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ भी खुश फहमियों के पाले, खून है सफेद उनका, वो रंग के हैं काले। उनसे वतन बचा लो, मेरे वतन के लोगों, तुम में अगर हया है, कश्मीर जल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब जी, बहुत खूब। तो अब हम देंगे मौका अपने सैफ साहब को फिर दोबारा, अगर वो हमें सुन सकते हैं और वो उनका अनम्यूट हो गया है तो वो आ जाएं, और उसके बाद हम खालिद चौहान जो पाकिस्तानी कम्युनिटी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनके पास जाएंगे। लेकिन सैफ साहब अगर आ गए हैं तो प्लीज आप आइए। जी, सैफ साहब के पास कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे खालिद चौहान साहब जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी एसोसिएशन यहाँ पे इसके रूह रवां हैं, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। जी आप आइए जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद भाई, तारिक भाई और कौंसल जनरल साहब, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इट इज़ अ वेरी इनकरेजिंग, इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट इन द कम्युनिटी। आप लोगों ने बहुत अच्छा जो ना शुरू किया है, तो इंशाल्लाह और भी ऐसी मीटिंग होती रहेंगी। वी शेयर आवर ओपिनियन, वी शेयर आवर, वी कोऑर्डिनेट आवर एफर्ट एंड स्ट्रगल विद यू। इस मौके के ऊपर साउथ एशियन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हमने एक पॉलिसी स्टेटमेंट है पोस्ट जारी की थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब दोस्तों के साथ वही शेयर कर दूँ ताकि कुछ रिपीटेशन ना हो, और जो भी कंसिस्टेंसी हो हमारे स्टेटमेंट में और हमारी पॉलिसी एज ए कम्युनिटी दुनिया को भी पता चले और हमारे दोस्तों को पता चले व्हाट वी थिंक, व्हाट इज द सिचुएशन इन द साउथ एशिया एंड व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट इज अबाउट एंड what is cause and how to resolve the issue. तो इसके ऊपर हमने एक वो लिखी है, तो I just read my post and it is like our policy statement too. The post topic of the post is 5th February Kashmir Day and Indian farmer struggle. In 21st century, the world dreamed to be the most advanced civilization, but unfortunately, human race on earth is struggling to survive and at a severe risk of diminishing. Power groups and nations relying on conspiracy, war economy, and responsible for destabilizing the world. As conflict directly benefit their wealth, and they are responsible for major crises and poverty, especially in the subcontinent Asia. For a long-lasting peace and stability in South Asia, Kashmir issue must need to be resolved. The conflict can trigger an atomic war that will not only be devastating for the subcontinent, but also for the entire human population. If we must survive as a human being, this is a time for the subcontinent people and the world population to stand up, raise voice, get united, take action against the powerful nation and their agents. Some major issues, those should be a serious concern for South Asia stability are Afghan peace process, radicalization of human population, non-performing democracy in the subcontinent, and human rights struggle in the entire subcontinent. That can be discussed later. For the shortage of time, we just don't skip this. Today is the 5th of February and Kashmir Day. On this day in 1949, UNO passed a resolution to administer a plebiscite in Kashmir. After the 71 war in Shimla, Pakistan and India agreed to resolve the Kashmir issue bilaterally. India denied resolving, but rather took an offensive action on August 5th, 2019. He revoked the enforcement of Article 370 of its constitution, autonomy to the state of the Jammu and Kashmir,
We think this unilateral breach of agreement was a warlike offense. However, we strongly believe militarization never solved the political problems. Hopefully, a responsible political leaders across the border will resolve the issue peacefully. It is an urgency now. Since 1950, Kashmir people have gone through a bloody struggle for their right of self-determination. Now the Narendra Modi government is implementing third-degree repression, human rights violation, and fulfilling the racist agenda, and a legal process promoting Hindu and other settlement in the Jammu and Kashmir. This process will result in non-Kashmiri settlement in Jammu and Kashmir. Ultimately, over a period, it will result in demographic changes in the valley and help the Indian government to consolidate its unlawful control over the Kashmir. It is a shame for the humanity to accept this behavior. The United Nations need to take a serious notice of human rights violation like brutalities and atrocities being inflicted on Kashmir. The United Nations must also force the Indian government to withdraw the unlawful changes to the status of Jammu and Kashmir by revoking Article 370. In addition, the Indian government should be forced to fulfill its commitment to UN Resolution 47 by providing Kashmir the opportunity to exercise right of self-determination. This will avoid further escalation between the two power, India and Pakistan. Canadian quiet diplomacy and sweet talk with the Indian government has brought no results so far. It is time that our Prime Minister, politicians, and all levels of take stern action against the genocidal policies of Modi government. We Canadians propose strong condemnation in the Parliament and UN against the gross human rights abuses that are being allowed or carried out by the Modi government. Number two, make Modi personally responsible for atrocities that are being inflicted under his policies and order. Number three, strongly and openly urge the Modi government to restore peace immediately and to compensate all the victims of violence, whether they are in Kashmir, New Delhi, or elsewhere in India. Punish those responsible for the crimes, disband the radical Hindu organization RSS, and bring normalcy to the Kashmir. Further, this Canadian community urges the government of Canada to visit the sites of violence in Delhi, Kashmir, and other affected places and provide information assistance to all those who need help for obtaining refugee status for Canada in order to escape the deprivation and danger to their life and earnings. At this time, we also acknowledge and stand in solidarity with the movement of Punjabi and other Indian state farmers. We think this is a great human crisis in the history of subcontinent. Farmers are most important, respectable group of workers and must be treated with respect. No farmers, no food, no life. We urge the Indian government to engage in dialogue with the farmers and stop suppression and violence. We have a strong feeling for the Indian farmers. We think denying the right of millions of Indian farmer families can destabilize Indian subcontinent region, as Indian democracy have already failed and unfortunately others are struggling in the region. We hope for good during the rest of the 21st century. Thank you. Thank you very much, Khalid Chauhan साहब. जी सैफ पन्नू साहब आपकी आवाज हमें आ रही है आज. आप प्लीज माइक के ऊपर आ जाइए. थैंक यू चौहान साहब. Thank you. नवीद साहब एक चीज जरूर बता दें कि पहले सेशन में अगर आप अपने आप को 5 मिनट से कम रखें तो ज्यादा अच्छा है ताकि सारे लोग कुछ कह सकेंगे. जी आप सब सुन रहे हैं और होपफुली आप इसके ऊपर रहेंगे. मैं चाहता हूं कि सैफ पन्नू साहब आ जाएं. जी सैफ भाई आपको आवाज आ रही? जी बहुत आवाज सही नहीं आ रही आपकी. नहीं सैफ अगर आप अपने फोन से कनेक्ट कर लो तो ज्यादा अच्छा है. हेडफोन लगाना पड़ेगा. जी अच्छा उससे चलें जी हम हेडफोन लगाना पड़ेगा उन्हें. ठीक है जी. सैफ साहब जब तक आते हैं हम आगे मूव ऑन करते हैं.
کسی بھی وائبرنٹ سوسائٹی میں اگر آپ سکسیسفل ریٹ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کی جو وومن ہے وہ ان کا کافی کلیدی رول ہوتا ہے کسی بھی اچھی سوسائٹی کو بلڈ کرنے میں. ہمیں فخر ہے کہ ہماری یہاں پہ کینیڈین وومن سوسائٹی جو ہے اس نے کافی اہم کام جو ہے وہ انجام دیے ہیں ہماری سوسائٹی میں جو ہے اس میں کولیبریٹ کرنے میں. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری وومن سوسائٹی کی دونوں لیڈرز موجود ہیں. ڈاکٹر بابرا رانا جو اس سوسائٹی کی پریزیڈنٹ ہیں اور رابعہ دستگیر جو بہت سارے والنٹیئر ورک کرتی ہیں ہماری کمیونٹی میں. میں چاہوں گا کہ رابعہ دستگیر پہلے آئیں اور وہ اپنی پریزیڈنٹ کا تعارف کرائیں اور پھر وہ ڈاکٹر بابرا رانا صاحبہ کو بلا لیں گی. جی رابعہ دستگیر صاحبہ پلیز. Thank you, Naveed bhai. Assalamu alaikum, everyone. I'm Rabia Noshirwani, speaking on behalf of Pakistani Canadian Women's Society. Today we mark the 17th year since Pakistan has officially been observing the Kashmir Solidarity Day. While we show solidarity with the Kashmiri cause, we ought to realize that who basically is the result, as a result to these dire circumstances, who suffers the most. In the history of war, it is the women who inadvertently become a target to the most unfortunate of the atrocities in unrestful communities. And isi wajah se, this is a cause which is very close to our heart. So PCWS ki taraf se hamara jo initial message ye hai ki we have been supporting as a silent supporter for so many years, but we haven't seen a change. And there has to be a difference in silent support and actually calling out the people who are responsible. So basically the wheel of change will only turn when the voices unite in calling out human rights violation around the world. Being apolitical is not conflict resolution, but conflict avoidance. It is a surprise that atrocious regimes can control the flow of information to this extent that they can mask the truth from reaching the rest of the world. Therefore, we are grateful to Canadian Muslim Media Club to be constantly nudging us and keeping the stir alive. The time is now to amplify the voices into one unified voice against human right violation, be it supporting the Indian farmers, victims of the Chinese detention camps, missing people in Balochistan, or Indian occupied Kashmir. Moments of silence are used in contemplation and reflection and remembrance of loved ones who we've lost in the past, but remaining silent can sometimes be very unethical for a brighter future. So we should be careful कि हमारे silence का क्या message जा रहा है. We need to be very upfront that who is responsible, and we shouldn't be scared about talking about the truth, or हमें we can't be liked by everybody in this world, and that's not even our responsibility, but our responsibility is to be true. So I would pass it over to Dr. Barbara Rana, founding member of PCWS, to share a few thoughts on how we can collaborate towards breaking this silent support into calling out those who are accountable in front of an international audience. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. And welcome to our new CG, Janbaz Khan. मैं जो हूँ ना, I'm not going to do a speech or whatever. I just want to make some comments. मेरे ख्याल है कि मुझसे पहले काफ़ी लोगों ने ये बात कर ली है कि कश्मीर में क्या हो रहा है. जब I think when you guys started the session, you talked about what is the resolution of all of this. Like how can we make an effect on the community and raise this issue of Kashmir. अब दुनिया में अगर पीस आना है उसके लिए तो ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन हो और रेजोल्यूशन जो है वो जाहिर है पीसफुल टॉक्स जो हैं उन्हीं के साथ हो सकता है. वायलेंस इज़ नॉट द आंसर. वायलेंस ऑलवेज लीड्स टू वायलेंस और वॉर जो है इट इज़ नॉट द आंसर. बट to get to that, we have to have some pressure from the world. अगर दुनिया जो है वो प्रेशर नहीं डाल रही है, चाहे वो कोई भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, मैं तो मुस्लिम वर्ल्ड में देखती हूँ कि चाहे वो पैलेस्टाइन है, चाहे वो कश्मीर है, या कोई भी हमारे मुसलमानों के जो इश्यूज हैं, उनमें वर्ल्ड जो है वो हमारे साथ नहीं है. और उसकी रीज़न क्या है कि हम जो हैं इफेक्टिवली ये जो इश्यूज हैं हम इनको रेज ही नहीं कर सके. We haven't been able to create the awareness about these issues. अब मैं कमेंट करूंगी इसके ऊपर, और ये मैं बहुत सालों से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जब अब ये हमारे फोरम्स भी होते हैं या हमारी इवन काउंसिलेट में भी जो हमारे फंक्शंस होते हैं इन इवेंट्स के ऊपर, उसमें कौन आता है? पाकिस्तानीज आते हैं.
پاکستانی جو ہیں وہ تو ایکوٹلی اویئر ہیں آف واٹس گوئنگ آن ان کشمیر. میں تو جب سے پیدا ہوئی ہوں میں سن رہی ہوں کشمیر کے بارے میں. And all of us are hearing about Kashmir and what the issues are in Kashmir or what the issues are in Palestine. I've been to Palestine too and it's terrible in Palestine actually. لیکن ہمارے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ہم ہی ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور ہم ہی کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے, اور ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں کہ کتنی اٹراسٹیز ہو رہی ہیں اور کتنا برا ہو رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. بٹ وی ڈونٹ کنیکٹ ود دا ادر کمیونٹیز. وی ڈونٹ لائک, میری نظر میں تو وی شوڈ بی لائک ویدر اٹ از میڈیا, چاہے اب یہ میڈیا کے بھی جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, who are these media people? They are all from Pakistan. So اگر ہمیں کچھ کرنا ہے really, if we want to make a change, then we have to create awareness in the other communities. We have to actually involve the media from outside. اور اسی طرح سے اگر کاؤنسلیٹ وغیرہ میں بھی اگر کوئی فنکشنز وغیرہ ہونے ہیں کشمیر سے ریلیٹڈ, تو اس میں خالی پاکستانیوں کو نہیں آنا چاہیے, اس میں دوسرے لوگوں کو آنا چاہیے تاکہ ان میں اویئرنیس کریٹ ہو کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. Unless we do that, nothing is going to change. Second thing is political engagement. میں دیکھتی ہوں کہ جو ہماری پنجابی کمیونٹی ہے, ہماری جو سکھ کمیونٹی ہے, why are they like, آپ فارمرس کی اب یہ جو ہو رہی ہے پروٹیسٹ آج کل, آپ دیکھیں کہ ورلڈ جو ہے they are responding to it. Why are they responding to it? Because ہمارے جو سکھ بھائی ہیں وہ بہت ہی زیادہ پولیٹیکلی انگیجڈ ہیں. ہمارے ٹروڈو صاحب بھی بیان دے رہے ہیں, باقی سب بھی بیان دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب پیلسٹائن کا مسئلہ تھا تو ہم نے کتنا, we tried to influence Trudeau, but he did not say anything about Palestine at all. So if we want to be heard and if we want to create awareness about these issues, then we need to be politically engaged. ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے, ہمارے بچوں کو ضرورت ہے کہ وہ politically engaged ہوں تاکہ ہم awareness create کر سکیں ان these issues پہ. اور جب ہم اس stage پہ پہنچیں گے, then maybe we can build some pressure to resolve these issues. But otherwise, I don't see anything changing. This has been happening for the last 30, 40, 50 or whatever years. Every event I go to, it's the same thing. We talk amongst with each other, and then we just go away. So those are the comments I want to make. Thank you. بہت شکریہ ڈاکٹر بابرا رانا. اینڈ وی بالکل ہم نے یہ نوٹ کیا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کونسل جنرل صاحب بھی اپنے نوٹس بنا رہے ہیں, اور وہ ضرور اس کو بھی ایڈریس کریں گے, اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کی ان باتوں سے کچھ سیکھیں گے. قوموں کو اگر آپ دیکھیں تو اگر کسی سوسائٹی کو بلڈ کرنے میں کسی چیز کا ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس کی اپنی زبان ہوتی ہے. اور ہماری یہاں پہ جو ہمارے ملک کی, ہمارے اس زبان کی جو حفاظت کرنے کے لیے کسی نے بیڑا اٹھایا ہے تو کینیڈا اردو ایسوسی ایشن ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان آج موجود ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا ہماری ڈاکٹر ہما شعیب صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں. جی ہما شعیب صاحبہ. انمیوٹ کیجیے گا پلیز, انمیوٹ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ نوید بھائی. السلام علیکم. اور آنریبل کاؤنسل جنرل جناب شہباز خان صاحب, ویلکم ٹو وینکوور. اور مسلم میڈیا گروپ, آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے یہ ایک بہت سینسٹیو ٹاپک ہے, اس کے لیے آج ہم سب کو جمع کیا اور ایک فورم کی طرح سے ہم سب کو ایک جگہ بٹھایا, اور ہم اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں, اپنے خیالات کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے تو بس ایک یہ کشمیر سالیڈیرٹی کا دن ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو کشمیر میں یہ جو چل رہا ہے یہ ہر روز ہو رہا ہے, ہر روز قتل ہو رہے ہیں, ہر روز لوگ مر رہے ہیں, ریپس ہو رہے ہیں, عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے, بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے. کچھ نہیں پتا کہ کس حد تک. آج میں گوگل کر رہی تھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو لاسٹ ایئر لاک ڈاؤن ہوا ہے تو اس میں 200 لوگ مرے ہیں, جبکہ یہ فیکٹ سامنے آ رہے ہیں, جبکہ اس سے کہیں زیادہ ہزاروں لوگ مرے ہیں اور ہم سب وٹنس ہیں. تو دنیا کو یہ پتا ہے کہ 200 لوگ مرے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ 200 لوگوں کا ذکر ہے اور 400 لوگ زخمی ہوئے ہیں, 4000 لوگ زخمی ہوئے ہیں, جبکہ فیکٹس اور فگرز بہت ڈفرینٹ ہیں. تو میں بس یہی کہوں گی, جہاں دیکھیں ایسی جگہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اس کے پیچھے ایک ہیومینیٹیرین ایشو کو بالکل انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے, پیچھے کر دیا گئے ہیں کہ جو انسان مر رہے ہیں, جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں, بس صرف زمین کے ٹکڑے کی حیثیت ہو گئی ہے. تو آج جیسے کہ
डॉक्टर बाबरा ने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा सारा मीडिया मौजूद है और हमारा मुस्लिम मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया है और उसके अलावा हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। मेरा ये ख्याल है कि हम सबको हुकूमती सतह पे और अवामी सतह पे सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है। ये जो 200 लोग लिखे हुए हैं वो फैक्ट नहीं है, फैक्ट इज डिफरेंट देन फिगर। तो हमें वो फैक्ट्स लोगों के सामने लेके आने हैं और उसके लिए मैं खड़ी हो जाऊं या डॉक्टर बाबरा खड़ी हो जाएं या आप लोग अलग अलग खड़े हो जाएं, नहीं, कुछ नहीं होगा। बीइंग अ कैनेडियन पाकिस्तानी, बीइंग अ कैनेडियन मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम सबको एक कॉन्क्रीट और स्ट्रक्चर्ड कैंपेन बनानी है, उस पर मिल के काम करना है। दिस इज द इशू कि हमें बडी अप होना है, हमें एक साथ मिल के उसके लिए कुछ सोचना है और एक साथ उस पर अमल करना है, ताकि सबसे पहले मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। फिर हमें गवर्नमेंट लेवल पे, मुझे याद है 2-3 साल पहले एक आध प्रोग्राम्स हुए, चीज़ें होती हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे अब तक चीज़ें हो रही हैं। हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, बट वी डोंट हैव एनीथिंग कॉन्क्रीट। सो आई थिंक दिस इज द टाइम वी शुड गेट टुगेदर एंड इस तरह का फोरम जो आज हुआ है, ये फोरम ऑनगोइंग होने चाहिए। इन टॉपिक्स पे, इन चीज़ों पे ऑनगोइंग मीटिंग्स होनी चाहिए, मंथली मीटिंग होनी चाहिए एंड मंथली वी शुड बी अचीविंग समथिंग कि इस हफ्ते या इस महीने हमने क्या किया। तो बस मेरा यही मशवरा है। बहुत सालों से ज़ाहिर है हम सब के दिल कश्मीर के साथ हैं और हम सब के दिल रो रहे हैं और हम सॉलिडेरिटी डे मना रहे हैं और मैंने खुद बहुत मीटिंग्स अटेंड की हैं जिसमें हमने, हारून भी हमारे साथ थे मीटिंग में, लेकिन एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। Let's get together and let's come up with a solution and let's get the government aware and let's get people aware of what is going on, because we are all ambassadors of Kashmir. बहुत बहुत शुक्रिया, बस मुझे यही कहना था। थैंक यू सो मच हुमा जी, बहुत शुक्रिया हुमा, आपने बहुत खूबसूरत बात की। मैं छोटी सी नवी साहब, मैं आपकी इजाजत से जी इसमें ऐड कर दूं कि इस वक्त हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो चीज अफेक्ट करती है सोशल मीडिया के थ्रू खास तौर पे, वो एक प्रोपेगेंडा मुहिम है। मैं अभी पिछले 2 दिनों से एक चीज देख रहा था कि एकदम से जब कश्मीर सॉलिडेरिटी डे आ रहा है और पता है कि हमने कश्मीर पे बात करनी है, तो एक बोस्निया के मुतालिक एक स्टेटमेंट बाहर आ गई है और वो फैल रही है और हर तरफ उस पे बात हो रही है। मैं एक छोटा सा जिक्र और करूं कि इंडियन क्रॉनिकल्स जो आया था, EU डिसइन्फो लैब, जो यूरोपियन कम्युनिटी ने जिसको अनर्थ किया था, वो इतनी बड़ी एक खजाना था जिसके ऊपर बात होनी चाहिए थी और उस पे सबसे कम बात हुई और वो इस काबिल थे कि वो हमें उन्होंने डाइवर्ट कर दिया वो अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट के मुतालिक। तो इस तरह की बहुत सारी कोशिशें होती हैं। जो आप बात कर रही हैं 200 लोगों की शहादत की फिगर, ये भी उसी तरह का एक प्रोपेगेंडा मुहिम है जिसमें वो थोड़ा करके दिखाते हैं। आप सिर्फ इससे अंदाजा करें अट्रॉसिटीज का कि 9 लाख से ज्यादा फौज एक छोटी सी वैली में है और जहां पे उनके पास वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्पेशल उनके पास ताकत है कि वो अगर पूरे खानदान को भी कत्ल कर दें, शहीद कर दें, तो उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मीडिया पे आमतौर पे बात होती नहीं है, क्योंकि हम यूजुअली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। तो आई थिंक आपने बड़ा सही हमें बताया है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच for doing this. तारिक, थैंक यू सो मच। सैफ भाई रेडी हैं? सैफ भाई आप आए। अगर सैफ भाई रेडी नहीं है, तारिक भाई आप हैं, आप इनको फोन पे ले लीजिए सैफ भाई को, और वो कुछ कहना है तो वो कह दें। जस्ट कॉल हिम। ठीक है, ठीक है जी। अब हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ। जो ये हमारे कौंसल जनरल साहब हैं, हमारे जो चीफ गेस्ट भी हैं, हम चाहेंगे
کہ یہ مڈل میں یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور یہ ہمارے ساتھ آخر تک رہیں گے، اور آپ لوگوں کو جو بھی کوئی اور کویسچنز ہوں گے ہم چاہیں گے کہ آخر میں وہ بھی ایڈریس کر کے جائیں. اب اس کے بعد فارمیٹ اس طرح کا ہے کہ کونسل جنرل صاحب آئیں گے اور وہ ان کے بعد پھر میں جو ہوسٹنگ کی ذمہ داری ہے وہ طارق یانی صاحب کو دے دوں گا، تو آپ کو ایسا باری باری آپ کو مدعو کریں گے. آپ اپنے خیالات رکھیے اور ہمارے کونسل جنرل صاحب یہاں پہ آپ کے ساتھ موجود رہیں گے، اور کوئی ایسا کویسچن ہوا جو ہماری پاکستان گورنمنٹ کے حوالے سے اس کو بھی وہ ایڈریس کریں گے. جی ہمارے آنریبل کونسل جنرل صاحب، جی پلیز آپ آئیے. السلام علیکم جی. وعلیکم. میں یہ چاہوں گا کہ جو ابھی میں نے آپ کی ڈسکشن ابھی تک سنی ہے اس میں جو موسٹ کریٹیکل تھنگ جو میری جسے کہتے ہیں ناقص سوچ کے مطابق ہے کہ ہم لوکل کینیڈینز کو یہ انفارمیشن پہنچا نہیں پا رہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے سنس پاکستان میں اردو اور انگلش دونوں آفیشیل لینگویجز ہیں، میں یہ اپرچونٹی لوں گا کہ میں یہ اس کو انگلش میں لاؤں تاکہ یہ چیز آپ تک بھی پہنچے اور ان کینیڈینز تک بھی پہنچے جو کہ نان پاکستانی اوریجن ہے. So, without further ado, it's a pleasure to see a unified expression of solidarity with Kashmir by all of you who are present in BC. However, I would take this opportunity to suggest that next time when we get together like this, and I hope a point was raised that it should be on monthly basis, I concur. We should also invite our associations in Alberta, Saskatchewan, and as far up north as Yukon territories. Let's make a unified stand, a unified forum. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today is a day to express solidarity with the people of Kashmir. This day is observed to extend political, moral, and diplomatic support to the oppressed people of Kashmir who have suffered enormously and have been brutalized by India since 1947. Over 8 million Kashmiris have been turned into prisoners in their own very homes. With more than 900,000 troops of Indian armed forces deployed in a small part like Kashmir, holding the entire nation of Kashmir as hostage. The government and people of Pakistan, no matter where they are, hold Kashmir and people of Kashmir dear to their hearts. The issue of Kashmir is not only an unfinished partition agenda, but it has broader human dimensions as well under UN Charter and UN Security Council resolutions regarding inalienable rights of the Kashmiri people. A student of history of the subcontinent would know how the people of Kashmir have been repressed since 1947 by India. The repression by Indian armed forces is not only brutal, but is merciless and is true representation of crimes against humanity. A perpetual state of war crimes is being systematically executed by India and its state institutions. The Kashmiri struggle for the right of self-determination is characterized by defiance, resilience, courage, and forbearance. Since the occupation of Kashmir by India, the patience and determination of the people of Kashmir has not dimmed, despite unprecedented sacrifices. Since 1989 and the launch of Kashmiri Intifada, their zeal for their inalienable rights has attained new heights. The people of Kashmir continue to raise their voice against atrocities, barbarism committed against them by India. The brave and proud people of Kashmir have not bowed to an inhuman onslaught by the occupational armed forces of India. Ladies and gentlemen, it has been more than 18 months since India's actions of August 5, 2019, which revoked the autonomy of Kashmir, came into effect. This has resulted
in massive deployment of troops, curfew, communication blackouts, including shutting down of the internet, phones, arbitrary detention of thousands of Kashmiris, including political leaders, activists, journalists, lawyers, and to a greater extent, even potential protesters who have not even come on roads. Curbs on peaceful protests, restriction on even children going to school, and people seeking medical care in defiance of the international human rights instruments have also been imposed. The designed demographic change to silence the voice of Kashmiris is the most dangerous and an abhorrent criminal act which has been perpetrated by India against the indigenous population of Kashmir. These changes are being carried out through promulgation of illegal domicile rules, changes in property laws, and downgrading the status of native languages. Incentives are being offered to Indian citizens to settle on the occupied lands of Kashmiris in violation of international law, particularly the 4th Geneva Convention. India continues to use its draconian sedition and counterterrorism laws to silence peaceful dissent at individual as well as non-governmental organizations levels, targeting those who have been critical of India's action or policies. The Indian government action has received widespread condemnation from international human rights bodies, including United States Congress, European Parliament, UN Human Rights Council, Human Rights Watch, and OIC Independent Permanent Human Rights Commission. Even today, the Voice of America's press release or a press statement reflected negativity at net disconnection in Kashmir. According to the South Asia Director of Human Rights Watch, instead of addressing growing attacks on minorities, Indian authority bolstered their efforts to silence critical voices. The OIC, an independent permanent human rights commission, has conveyed its dismay and strong condemnation over the continued ongoing human rights violations in the occupied territories of Jammu and Kashmir. In its statement, the OIC have also stated that Indian government has deployed more than 500,000 security personnel to contain the backlash against its illegal measures, which has practically turned the Indian occupied Kashmir into the biggest open prison in the world, parallel to what Adolf Hitler's Nazi regime did during World War II. There are confirmed reports of India inflicting collective punishment in form of unmarked graves, night raids, which have very severe negative impact on the people, gang rapes, house-to-house searches, stripping of young men and women, closure of businesses and schools, shutting down of internet and landlines, and detention, torture of politicians, journalists, and human rights activists by the Indian security forces is rampant. The infamous and inhuman laws of Armed Force Special Powers Act and Public Safety Act of India enables Indian security forces to trample human rights of innocent Kashmiris with complete and absolute impunity. India has not honored its international commitments as per international norms, which in itself is against the United Nations Charter and relevant UN Security Council resolutions. Respecting its commitment to the international law is indispensable for durable peace and security in South Asia at the behest of the Indian state. The issue of Kashmir and India's action therein has bedeviled peace in the region. It may have grave consequences for the future of not only South Asia, where 1/4 of the world population lives and is the poorest region in the world, but it has global implication, not only economically, but security and militarily as well, because both India and Pakistan are nuclear capable states. It is incumbent upon all of us
to continue to highlight the Kashmir issue, especially the human rights violation, until Kashmiri sufferings are over and they finally are granted right of self-determination as per the UN security resolutions. I am deeply grateful and I'm honored to all of you who have been strong voices of people of Kashmir in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, and the Yukon territories, as well as the other provinces of Canada. That being said, the solution, which has been raised quite a number of times as to what could be the solution, ladies and gentlemen, the solution is talks, negotiations, irrespective of the non-state actors who have the will and the means to destroy any peace effort. There are people on both sides of the border who do not advocate peace. Unfortunately, at this stage, even within the Indian state government, most of these elements are not looking for peace. They believe in coercive diplomacy, they believe in bullying, and they believe in a very dangerous theory which has already brought this world once to the brink of total destruction during World War II, and I would identify that as Nazism of Germany, fascism of Italy during World War II. We must keep negotiating. There is no other option. Kashmir needs to be resolved. It has to come to a logical conclusion with mutual respect for each other and the wishes and the will of the Kashmiri people, which is primary and is at the heart of this issue. Now, I would also like to address a few comments which were raised regarding the EU Disinfo Lab. India has initiated a strategic initiative under which disinformation is being spread. Ladies and gentlemen, this is not something new. If you read history, if you read into it, during World War II, there was a gentleman by the name of Mr. Goebbels, the information minister of Adolf Hitler, who advocated this theory and this philosophy and this strategy, which India is now implementing in Kashmir to put a shade over the world's eyes, to not let them see the truth. And it covers that up with a very, very sweet covering of economics, of commercialism, of business in India. Ladies and gentlemen, money can never buy peace. That is guaranteed, and that is an unwritten law. I also agree that we must include people in such discussions who are of non-Pakistani origin. I would like to take this opportunity to request all of you to give me the list, give me your names, give me your contacts. Who would you think would join us to convey this issue to the right people within the Canadian system, within the global affairs? And I would go to them myself with you so that we can have what you desire to do. Another aspect which I would like to leave it as a question mark, since it is such a pleasure to see all of you together, is there is a requirement of a Kashmir Council so that we can focus together on the issue of Kashmir and we remain on one page. I can suggest that all the associations can designate an individual from their setup and convert it into a Kashmir Council, and we can have a physical meeting or a Zoom meeting with the kindness of Mr. Naveed, and establish this organization. We should now, again, Dr. Rana was saying, we should now approach this issue in a more cohesive, concerted, and in a systematic manner together.
individually, we can do whatever we want. But there are certain objects, there are certain subjects, there are certain things on which we should act as one. And I suggest that we should look into it and you should discuss it amongst yourself. And my office is here to facilitate the establishment of such an organization or a council which should represent all of you on Kashmir. And that the council should have this agenda to bring out the names of, let's say, academics, intelligentsia, literati, people who matter, who are more inclined towards the brutality which India is doing. Let's get together. आप इसको सोचिए, आप इस पे गौर कीजिए. ये मैं एक ओपन क्वेश्चन आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ. मुझे निहायत खुशी है एंड मुझे बहुत फख्र है कि आप सब लोग इकट्ठे कश्मीर के लिए अपनी सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं. मेरी तरफ से आपके लिए my personal compliments, my personal appreciation, and I thank you all for this. I'm available throughout this event, during it or even after it, as Naveed Saab or as Kyani Saab would conduct it. I'm here to answer any questions. Thank you very much. Kyani Saab. Tariq, unmute कीजिए. जी बहुत बहुत शुक्रिया कौंसल जनरल साहब. हमारी हमेशा से यही उम्मीदें आपसे, और आपने बहुत ही अच्छी शुरुआत भी की है कम्युनिटी को यूनाइट करने में. बहुत बहुत शुक्रिया. हम वेट कर रहे हैं तारिक क्यानी साहब आए और अपनी सरप्राइज अंजाम दें. थैंक यू सो वेरी मच ऑनरेबल कौंसल जनरल साहब. बहुत शुक्रिया आपकी इस पूरी स्टेटमेंट का. बहुत अच्छा लगा आपके ख्यालात सुन के, आपकी सोच सुन के. मैं बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, कुछ और गेस्ट हैं जिनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है. हमारे बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं. असद सैयद साहब हैं, शौकत साहब हैं, शहजाद नज़ीर साहब हैं, साजिद हमीद साहब हैं, हमारे बहुत अच्छे खूबसूरत दोस्त हैं. इससे पहले मैं छोटी सी अर्ज आपसे करना चाहता हूँ कि इंतखाब साहब हैं. मैंने कुछ इंटरव्यूज किए थे. जस्टिन ट्रूडो साहब से हमने 1-on-1 इंटरव्यू किया, और जब हमने पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानियां दी हैं वॉर ऑन टेररिज्म में, तो आप पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं देते? आप पाकिस्तान को डू मोर कहते हैं या उस पर शक करते हैं. तो जस्टिन ट्रूडो साहब का जवाब जो था वो ये था, स्ट्रेट जवाब नहीं था कि वो क्यों नहीं देते. He started talking about हमारे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज, हमारे माइनॉरिटीज की चीजें जो है, उन चीजों के ऊपर बात करने लगे थे. इसी चीज को बेस करके मैंने एक और इंटरव्यू किया था लिबरल पार्टी के एक एमपी हैं केन हार्डी, उनसे, जब कश्मीर में अभी अट्रॉसिटीज शुरू हुई 5 अगस्त के बाद. तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें पता ही नहीं है कि कश्मीर में क्या हो रहा है. मेरी उस वक्त चूंकि एम्बेसडर थे तारिक अजीम साहब, मेरी उनके साथ 1-on-1 बात हुई कि हमारी जो एम्बेसी है, हमारा जो कौंसल ऑफिस है, हमारे जो हाई कमीशन ऑफिस है, उनको ज्यादा टाइम इस चीज के ऊपर स्पेंड करना चाहिए कि वो जो ये हमारी गवर्नमेंट के लोग हैं, हमारे एमपीज हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनको इन चीजों के बारे में आगाह करें, इन चीजों के बारे में यकीन करें कि उनको पता नहीं था. तकरीबन 2 हफ्ते की कांस्टेंट उसके पीछे कोशिश करने के बाद वी गॉट अ रिटन स्टेटमेंट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जब भी करें, आप शायद हमारे साथ इतना लिंक ना रखें जितना आपका इनके साथ होना चाहिए, टू टॉक अबाउट कश्मीर. वहां पे जो अट्रॉसिटीज हो रही हैं, मैंने उनको वही रेफरेंस दिया था जस्टिन ट्रूडो का, कि जब ह्यूमन राइट्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ जब ह्यूमन राइट्स की इतनी बड़ी वायलेशन हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है, तो आप इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? हमारी कनाडा की कोई स्टेटमेंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैं चाहूंगा कि हमारा जो कौंसल ऑफिस है या हमारा जो हाई कमीशन ऑफिस है, खास तौर पे वो इन लोगों के साथ कांटेक्ट करके तो टॉक अबाउट कश्मीर इश्यू, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं. तो एक मेरी ये सजेशन है कि आप लोगों की जितनी ज्यादा डिस्कशन उनके साथ हो, इसके ऊपर आप उनको बताएं, उनको यकीन करें कि उनको आगाही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है. With your permission, I would like to respond to it. जी सर.
جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ایک گزارش کی ہے کہ ہم اس فورم پہ اب آج اکٹھے ہیں. نوید صاحب جب میرے ساتھ ملنے آئے تب بھی میرا یہی ایم تھا, and I believe that diversity is the most important part of unity. ہم آج اکٹھے ہیں, آپ یہ کاؤنسل بنائیں, آپ میرے پاس آئیں, آپ میرے ساتھ بیٹھیں, and let's strategize together. جو پاکستان میں کرنا ہے وہ بھی, جو پاکستان سے منگوانا ہے وہ بھی, اور جو ہم نے یہاں بھی کرنا ہے. دیکھیے جی, ایک آدمی on its own cannot lift the entire world on his shoulders. Or let's say two heads are better than one head. You are and I am a team on Kashmir for now, and later on we shift and broaden the horizon on economics, on business, on commerce, on like there was a brilliant suggestion stated by somebody, I believe it was Dr. Rana, who very sagaciously stated that it's time that our children should be integrated into the Canadian policy making matrix. From police to armed forces to politics to everywhere, we should now encourage our children to stop driving Uber. اور وہ سیاست میں آئے, وہ معاشی چیزوں میں آئے, وہ بیوروکریسی میں آئے, تاکہ ہماری ایک سے بنے. جب تک ہم اس پاور میٹرکس سرکل سے, اور اس کے لیے ہمیں ایک یونیفائڈ فورم چاہیے, ایٹ لیسٹ فار ویسٹرن کینیڈا. میرے پاس دیکھیے, میں آئی ایم اے سرکاری ملازم, ملازم کی انگلش ٹرانسلیشن ہے سرونٹ, اور نوکر کے لیے کوئی نہیں ہوتا کہ اس کا دروازہ بند رہے. آپ نے جب آنا ہے, آپ نے جیسے کرنا ہے, رات کے کسی پہر میں کرنا ہے, آئی ایم اویلیبل. آپ یہ اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جسے کہتے ہیں کرم ہے, and it's a silver lining to COVID, that because of this thing, we are now on one page talking to each other. So why not get together and make a team who addresses Kashmir issue, then later on go into looking after children, our children in Canada, to be into the where it matters. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ let's get together, let's make a team. آپ لوگ اپنی ٹیم بنائیں, اکٹھے ہو کے میرے پاس آئیں, let's discuss it, let's strategize, let's make it. Without a strategy and without a plan, we can't go anywhere. آئیں بیٹھے, آپ جو کہیں گے will be incorporated in my recommendations, and I will make sure that they are done and we are supported. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. طارق 8:30 کو نظر میں رکھیں. 8:30 we will wind up, please. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ سر, اور بہت شکریہ. یقیناً آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے میں اچھا لگے گا, اور جس طرح سے خیالات کا آپ نے اظہار کیا ہے, یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور مجھے خوشی ہوئی آپ کی باتیں سن کے. جی ہمارے پاس جو مہمان ہیں, میں اسد سید صاحب, ہمارے بہت خوبصورت ایک ایکٹیوسٹ ہیں ہماری کمیونٹی کے, اور ماشاءاللہ الیکشن میں ایک سے زیادہ دفعہ شرکت کر چکے ہیں, ویری امپورٹنٹ ممبر آف آور کمیونٹی. اور ہمارا جو اقبال اکیڈمی تھی اس کے بھی روح رواں ہیں. تو اسد بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی شکریہ طارق بھائی. السلام علیکم. کونسلیٹ جنرل صاحب, کینیڈین میڈیا کلب, کمیونٹی ایسوسیشن, PCA, PCCA, PCCCA, کینیڈا اردو ایسوسیشن, وومنز ایسوسیشن, آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے. سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں کینیڈین مسلم کلب کا, میڈیا کلب کا, جنہوں نے ایک بہت ہی مثبت کوشش کی ہے. ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہے جس کا مقصد یہ سوچنا ہے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے, ہمیں اس بارے میں کیا اسٹریٹجی بنانی چاہیے. سو وی آل نو دا پرابلم, لیکن اس پرابلم کا سولوشن کیا ہے. میڈیا کلب کی جو یہ کوشش ہے یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کارآمد ہے. اب اس کا مسئلہ, اس مسئلے کا حل بڑا سمپل بھی ہے اور سمپل نہیں بھی ہے. ہمیں اپنے کاؤنٹر پارٹس اس دنیا جس میں ہم رہتے ہیں, کینیڈا یا ویسٹرن ورلڈ, ہمیں ان لوگوں کو بتانا نہیں بلکہ انہیں ریئلائز کرانا پڑے گا کہ کشمیر ایک ایسے مسئلے کا
पर बैठा हुआ है, एक ऐसे बारूदी सुरंग पर बैठा हुआ है, एक ऐसे फ्लैश पॉइंट पर बैठा हुआ है कि अगर ये इरप्ट हुआ इस पूरे खत्ते में तबाही मच जाएगी। इस मसले के दो फरीक, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों एटॉमिक पावर्स हैं, दोनों 3 दफा जंगों में इंगेज हो चुके हैं। उसका मोस्टली मसला कश्मीर ही उसका मेन इशू था। अगर अब चौथी जंग शुरू हुई तो वी डोंट नो कि ये मसला इस दुनिया को कहाँ, इस कुत्ते को कहाँ ले जाएगा। तो हमें ये रियलाइज कराना चाहिए इस कम्युनिटी में, इस माहौल में, यहाँ के मीडिया में, यहाँ के पॉलिटिशियंस को, कि इस मसले को सीरियस तवज्जो दी जाए। उसके अलावा कश्मीर के मसले को हमने न सिर्फ एक कश्मीर मसला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इट्स ह्यूमन इशू जिसका जिम्मेदार ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है। शायद लोगों को ये कम बात मालूम है कि 1800 में ब्रिटिश एम्पायर ने पूरे कश्मीर को डोगरा नवाबों के हाथ 75 लाख में बेचा था, पूरी कश्मीर स्टेट को। और जब से कश्मीरी मुसलमानों की, कश्मीरी अवाम की फ्लाइट का स्टार्ट हुआ है और वो आज तक जारी है। जब पाकिस्तान बना उसके बाद भी इस मसले का जो सॉल्यूशन था कि मुस्लिम स्टेट्स विल गो टू पाकिस्तान, वो नहीं हो सका और उसमें धांधली की गई। उसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एक जद्दोजहद शुरू की और उसमें मैं कहूँगा कि उन्होंने निहत्ते कश्मीरियों ने ये जद्दोजहद की और आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कराया। उनके साथ जो हमारे कबायली हैं, उन्होंने कश्मीरी अवाम के साथ खड़े होकर जंग की। उसमें महसूद कबाइल हैं, महमद कबाइल हैं, आफरीदी हैं। उन्होंने मुजफ्फरगढ़ तक आज़ाद कराया। उसके बाद वो श्रीनगर से 30 माइल तक पहुंच गए थे। उसके बाद क्या हुआ, तारीख खामोश है, वी डोंट नो। 2 दिन तक वो वहाँ बैठे रहे, 30 मील का फासला तय नहीं हुआ और फिर जो है ना वो डोगरा महाराज इंडिया चला गया और उसने कश्मीर जो है ना इंडिया के नाम लिख दिया। So it's a tragic, it's a very tragic thing, and I hope कि हम सब, जैसा कि कौंसलर जनरल साहब ने कहा, कि हम सब अपना अपना किरदार यहाँ अदा करें और वो अपना किरदार इस सोसाइटी में अदा करें। आपका आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। We have to form a council and we have to do things together. Thank you very much. Time is short. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू असद भाई, बहुत शुक्रिया। आपने जो ये बताया कि डोगरा साम्राज्य के हाथों अंग्रेज ने उनको बेच दिया, कहानी बिल्कुल सही है कि ये 140 साल में कश्मीरियों को 2 दफा बेचा गया और कश्मीरी एक ऐसी बाइज्जत और बागैरत कौम है कि उसने बिकने से इनकार किया हुआ है। और ये जो आज आप देख रहे हैं, ये 70 साल से 72 साल से जो कोशिश है, ये भी इसी गुलामी को कबूल ना करने की सूरत में है और मुझे यकीन है कि वो कभी भी इस गुलामी को तस्लीम नहीं करेंगे। हमारे साथ एक और बहुत खूबसूरत इंसान अब काफी अरसे के बाद हमें नजर आए हैं, पीसीसीए के वो कहते हैं ना जो लाइफ पार्टनर हैं, तनवीर चौधरी साहब। तनवीर साहब जी, तनवीर साहब से पहले सीजी साहब ने एक कमेंट करना है, प्लीज उनको कमेंट कर लें। जी 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 जी, अभी असद सैयद साहब ने मसूद लश्कर्स के बारे में बताया तो वो मैं ऐड करता चलूं जी कि मसूद लश्कर के जो कमांडर थे वो मेरे वालिद साहब थे और वो 30 किलोमीटर नहीं थे, वो उस पहाड़ी पे बैठे हुए थे जहां नीचे श्रीनगर एयरपोर्ट नजर आ रहा था। और उसके बाद जो तारीख खामोश है, तो कभी आप आइएगा, आपको मैं वो आर्टिकल दे दूंगा कि तारीख की वो खामोशी में क्या था, ताकि आपको पता चले कि कितने कम मार्जिन से हम कश्मीर को गवा बैठे। थैंक यू वेरी मच। जरूर सीधे साहब, मुझे पता है कि आपका ताल्लुक है महसूद कबाइल से और मुझे फख्र है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और ये बहुत सैड इंसिडेंट हुआ है जो जिसका हम अभी तक भुगत रहे हैं पाकिस्तान। That's right. तनवीर साहब तो मेरे ख्याल में इस वक्त गायब हैं, मगर हमारे साथ एक बहुत और वेरी इंपॉर्टेंट
کمیونٹی ممبر اور ہمارے ایکس پریزیڈنٹ پاکستان کینیڈا ایسوسیشن شوکت خان صاحب تشریف رکھتے ہیں. شوکت صاحب مختصر سا جو بھی آپ فرمانا چاہیں پلیز. جی السلام علیکم ایوریون اینڈ مسعود صاحب ہر کل راشن انسان لزر ملاقات بشی. Thank you to Canadian Muslim media for holding this group and very thankful to everybody who has attended. The biggest problem we have, and I'm not going to repeat the history because everybody has done a tremendous job in telling us all about Kashmir. I would say why we are not being heard. Is there a need to do more? Absolutely. We need to do a lot. We need to put our hands together. We need to think of the things and ideas which are going to work, whether they are by sending letters and emails to the offices that matter, whether we have to create the online groups where everybody else can participate, and then we can circulate all those groups throughout Canada. But why we are not being heard in Canada? The reason being, as Dr. Rana already eloquently mentioned, that we need to get our voice heard through a representative. Asad Bhai has done a good job. We all have to, and all of you who are on this call have got every capability to represent. Get in the, I would say, echelons where we should, because you are not going to be heard if you don't have a voice and you are kind of stepping, using a step through representatives who do not represent you. So very strong point here. We have to have a representative that is going to represent Pakistanis, and that is going to represent the culture that we belong to, whether it's Kashmir or whether it's whatever problem we have. The second point, which Jan Baz Khan Sahab very well pointed out, is we can talk about making the consuls, we can talk about everything else, but till the time we are not all going to put our feet on the ground. So thank you. I know Sajid Bhai was in Pakistan day before yesterday, but he is on the ground today. So that's the kind of leadership we need. Harun is already arranging an event where he's going to put the boots on the ground, where people are going to see. So lots of good ideas that can be gathered, which are going to be used to reach out to the mainstream, and that those are the lines we should be thinking upon. We have got lots of effort, we have got lots of energy, but all of this energy should be channeled where it is going to reach to the echelons which really matter, whether it's foreign services, whether it's foreign ministry, whether it's Trudeau, whether it's Horgan, or whether it's our opposition leaders. We need to start thinking about those. The more noise we are going to create, the more we are going to get heard. Thank you very much. Assalamu alaikum. Back to you, please. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ شوکت صاحب. سی جی صاحب کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ جسے کہتے ہیں انہوں نے تو دریا کو کوسے میں بند کر دیا ہے, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک اٹ اسٹیپ فردر. آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ میں وہ گول جسے کہتے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا. مجھے پلیز کائنڈلی کشمیر کاؤنسل کے لیے ایک آدمی اپنی ایسوسیشن سے ایئر مارک کر دیں بائی ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے. ادروائز بائی تھرسڈے آئی ول ریچ آؤٹ ٹو یو مائی سیلف. Boots on the ground is the issue. Shaukat Khan Sahab has summed it up very nicely, and I take up his words and follow it through by suggesting all of you that if you could be kind and considerate enough to send me a name of a group of your association gentlemen who can be part of the Kashmir Council, and then we'd like to have a first meeting and initiate that thing. And agar aap mujhe Tuesday Wednesday tak bhej denge to theek hai, nahi to Thursday tak I will approach you myself to put this thing on ground and make it more substantive, more concerted and more doable. And it's what jo abhi Khan sahab ne baat ki hai, we need to communicate our narrative and to the right people. But for that we need not just one head to sit and think everything, we need a team to do that. And it would be a pleasure and honor for me to be part of that team and to lay this foundation before my time here is up in next 3 years. That is more than ambitious for me. Thank you very much.
Thank you, sir. बहुत शुक्रिया और Dr. Barbara Rana कुछ कहना definitely comment करना आपका email address and phone number तो please kindly can you share with us so that we can communicate with you. जी मैं बिल्कुल आई वुड रिक्वेस्ट मैं नवीद साहब को साथ शेयर कर लेता हूं एंड वो आपके साथ शेयर कर लेंगे. हमारे वैसे टेलीफोन नंबर और जो ईमेल है वो वेबसाइट पे है और all the calls are attended and all the emails are personally seen by me. Okay. Dr. Barbara साहब. हाँ जी, बस मैं सिर्फ एक सजेशन देना चाह रही थी कि मोस्ट लाइकली आई थिंक वी शुड हैव maybe a seminar or a symposium on Kashmir. जब एक दफ़ा काउंसिल वगैरह बन जाए, मोस्ट लाइकली आई वोंट बी पार्ट ऑफ द काउंसिल बट वी विल हैव अ मेंबर. तो उसमें जो है हमें बुलाना चाहिए, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो कि काम कर रही थी, क्या कहते हैं उधर कश्मीर में, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हम उनको बुलाएं. हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं हम उनको बुलाएं, और इसके अलावा जितने भी हम लोग जिन लोगों को जानते हैं and who would be interested in coming, I think we should do a seminar on Kashmir. And I think it should be बजाय इस तरह की meetings करना, ये भी ज़रूरी है खैर to connect with each other. I think that's like my suggestion would be to do something like that so we can connect with the other communities, और जो लोग हमें जिनके influence की हमें ज़रूरत है हम उनको engage कर सकें इस सारी कहानी में. Very good suggestion जी Dr. Barbara साहब, thank you so much. आज हमारे साथ है जी साजिद हमीद साहब. साजिद साहब आप कुछ कहना चाहें, मुख्तसर रखिएगा, टाइम हमारे पास मुख्तसर है जी. भी साजिद हमीद साहब ओपन है जी. चलें फिर आप इंतखाब साहब को ले लें. हाँ जी, साजिद की आवाज नहीं आ रही. साजिद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही. इंतखाब साहब आ रही है. ये जी आ रही. मैं काफी देर मीटिंग में वहाँ बैठा रहा आप लोगों के साथ, मगर मेरे साथ मेरी टीम थी. हम लोग यहाँ ग्राउंड जीरो पे मौजूद है. आज कश्मीर डे है और सॉलिडरिटी डे है. हमने ये सोचा कि किसानों के साथ शामिल होकर के, जब एनिमी हमारा एक है तो हम सबको मिलकर ही इनके खिलाफ काम करना चाहिए. बाकी 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट की सजेशन नहीं है. डिस्कशन जो है वो बहुत सारी है और डिटेल डिस्कशन है. एक ऐसा इशू जो कि 70 साल से पड़ा हुआ है, उस इश्यू के लिए 1 मिनट या 2 मिनट बहुत इनफ नहीं है. तो हमें डिटेल से, मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी, लास्ट ईयर जब ये कश्मीर रैली हुई तो वी वर द फर्स्ट पीपल हु वर ऑन द ग्राउंड, नॉट हियर एट द वैंकूवर कन्वेंशन एम्बेसी. वहां पर इंडियन एम्बेसी के सामने जाके प्रोटेस्ट किया. 1 दफा नहीं 2-3 दफा किया. आज भी ये यहाँ मेरे दोस्त मौजूद हैं, ये सबके सब मौजूद है, यहाँ आए हैं. आप कह रहे कश्मीर का लिबरेशन, कश्मीर कमेटी बनी और वो आज तक उसका फोरम मौजूद है, व्हाट्सएप के ऊपर वहाँ डिस्कशन होती है, कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करता. ये फुरकान दल्लन यहाँ पे मौजूद है, शाम 6 बजे से यहाँ पे मौजूद है. ही इज ऑलवेज देयर फॉर वन कॉज. ये 1 इंच की कॉज के ऊपर ये बैनर द्वारा बनाए हैं, ठीक है. तो कहने का मतलब है कि बैठ करके बातें नहीं की जाती, काम किए जाते हैं. हमेशा से बातें बहुत हो गई और आप 90% लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे सिर्फ बातें करती है, दे आर नॉट इन एक्शन, ठीक है. और अगर आप लोगों ने एक्शन लेने हैं तो ये 2-2 मिनट के या सेकंड करके 1 मिनट की बात करके कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला. ओनली वन थिंग वी कैन डू इट फ्रॉम हियर, वन थिंग, सोशल मीडिया. एक्टिव हो सोशल मीडिया, लर्न हाउ टू यूज द सोशल मीडिया. क्योंकि हम यहाँ से बैठ के ना बंदूक चला सकते हैं, ना यहाँ से बैठ के गोली चला सकते हैं, ना यहाँ से बैठ के कुछ कर सकते हैं. So one thing we can do it at the social media. We have to get active. We have to know how to use the social media. We have to know how to engage with other communities. जैसे कि डॉक्टर बाबरा राणा ने कहा, बहुत अच्छी बात की. पिछले 15, 20, 30 सालों से वही 30, 40, 50 लोगों का टोला हमेशा कॉन्सुलेट जनरल तक जाता है. हर गैदरिंग पर वही लोग होते हैं, वही रोटियां खाते, वही पेट भरते चले जाते हैं. 50 लोगों का टोला, इट्स बीन ऑलवेज 50 लोग हमेशा वहां पे रोटियां खाते, रोटियां खा के चले जाते. डिडंट डू एनीथिंग. लेट्स डू समथिंग एक्टिव एंड आई विल कम. सर मैं आपके पास आऊंगा, आई विल कम बैक टू यू. ओके, इंशाल्लाह आपके पास आऊंगा और सजेशन लेके आऊंगा और कंक्रीट बात करूंगा, बिल्कुल कंक्रीट. आई एम नॉट गोना बी लाइक अ टेबल टॉक और जिक. आई एम अ मैन ऑफ माय एक्शन एंड देयर आर पीपल हु स्टैंड हियर, दे आर ऑलवेज देयर. लास्ट ईयर वो एक्शन हुआ, हम लोग यहाँ थे. आज 5 फरवरी याद आ गई सबको, प्रोटेस्ट याद नहीं आया है?
प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, यहाँ नहीं आ सकते थे, ये मीटिंग पोस्टपोन हो सकती थी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। मैं मगर यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट को एक बात शेयर कर दूं कि 72 साल में पहली दफा हुआ कि जो इंडियन काउंसलेट है उस पे झंडा नहीं चढ़ सका, क्योंकि सिख इतनी बड़ी तादाद में वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम उनको कवर कर रहे थे, वी वर ऑन द ग्राउंड। तो ये इसके लिए अगर प्रोटेस्ट करने हैं, आना है, बाहर निकलना है, तो पूरी कम्युनिटी को निकलना होगा और पूरा डिटरमिन होकर निकलना होगा। 10, 15, 20 लोगों को निकल के कुछ नहीं होगा, हम सबको निकलना होगा। बिल्कुल आपका मैसेज और आपकी जो आवाज और आपकी सोच है वो हम समझ रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। उसके बाद जी मैं चाहूंगा हमारे साथ इंतखाब अहमद साहब हैं। भाई मैं एक बात कह दूं? जी 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 जी, बस मैं जैसे साजिद भाई ने अभी जो बात की है कश्मीर कोलैबोरेशन कमेटी, आई पर्सनली एम part of Kashmir Collaboration Committee and I am the media person for that for the social media group. तो और उस कश्मीर कोलैबोरेशन कमेटी में फरकान गिलन साहब हैं और बहुत सारे हमारे कश्मीरी भाई भी हमारे साथ हैं और हमारी मीटिंग्स पिछले साल होती रही हैं और इनफैक्ट हमने सरे आर्ट्स काउंसिल सरे आर्ट्स थिएटर को बुक कराया था to present the positives and of Kashmir and the Kashmiri culture, but due to COVID, we couldn't do it. Booking मैंने खुद कराई थी. Harun was also in the meeting. But I was regularly attending all the meetings or there were huge plans. So I would personally suggest that please consider those plans and consider those individuals. Furqan has been doing a lot of, and we have a group of people. We have been attending these meetings last whole year. We were getting together and we were creating some plans. Thank you. Thank you so much. जी बिल्कुल we know. और बल्कि आप लोगों ने एक दफा वो कुछ कार्ड्स भी साइन करा के प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा को भिजवाए थे। आई डू रिमेम्बर, मैं उसमें था। जी इंतखाब साहब कुछ कहना चाहेंगे? इंतखाब हैं लाइन पे? तनवीर साहब को ले ले और फिर शेफ मलिक साहब। जी शेफ मलिक साहब। Hanji, Assalamu alaikum everyone. It's a pleasure to be a part of this discussion. We all have same feelings. We've talked a lot. We all have to do our job, and my 2 cents is definitely create awareness to all your friends who are not Muslims, but it's a matter of human right, and there will be positive results through this tough time. How we are getting together and making time to come up with solutions, I think it's an excellent. We are united, we are together. I respect everybody's feeling towards how they feel, and this has been an ongoing issue, and hopefully we're going to see some positive results. We just have to make sure we take the right steps, stay united, and put some pressure from above where we can be more effective. My 2 cents is create pictures say 1,000 words. We should have some statistics of what's going on in Kashmir, because people don't have a lot of time. They don't want to sit and listen to you. But if they see a post with some statistics to what's going on with casualties, with what's happening, they're not able to use internet, on all these things. If we create that on social media, it will reach out to everyone and they will have a better idea with what's going on in Kashmir. Thank you very much for my time. I appreciate it, and anything I can help out, I'm here. Thank you. Thank you so much, Chef. Thank you. बहुत शुक्रिया. हमारे साथ टाइम बहुत कम है जी, हमने खत्म करना था 8:30 पे. टाइम के बहुत नजदीक हैं. इंतखाब साहब अगर आप सुन सकते हैं तो मेरे साथ जी हमारे जो कैनेडियन मुस्लिम मीडिया क्लब के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव हैं पीरजादा साहब. उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि वो आखिर में बोलेंगे और वो सम अप करेंगे. तो इंतखाब साहब जी.
इंतखाब। जी उनकी आवाज नहीं आ रही, let's go with मैं थोड़ी सी बात कर सकता हूँ इसमें? जी जल्दी कर। जी मैं आ गया हूँ, सॉरी फॉर माय लिटिल बिट टेक्निकल इशू। जी अस्सलाम वालेकुम, इंतखाब अहमद, दिल अपना पाकिस्तान। आज मैं ये कश्मीर की रैली जो थी साजिद हमीद साहब ने अरेंज की थी, इसमें कम्युनिटी के कुछ लोग थे, लेकिन एक चीज जो मैंने बड़ी महसूस की है वो ये है कि जो कश्मीर जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तानी कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, वो उसमें जो कश्मीर के रेजिडेंट, आज़ाद कश्मीर के रेजिडेंट और इस सूरत में कनाडा में ऑक्युपाइड कश्मीर के रेजिडेंट्स भी नहीं आते ऐसी रैलीज में। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग तो फाइट कर रहे हैं, हमने 3 जंगें कश्मीर के लिए की हैं, लेकिन कश्मीर के लोग इटसेल्फ जो हैं उनकी पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं ना होने के बराबर है। और बल्कि अभी चंद दिन पहले एक साहब है, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, तो वो भी वो रिकग्नाइज भी नहीं कर सके इस सिचुएशन को कि भी कोई टीवी मीडिया उनके लिए कोई काम करना चाहता है। वो ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, और ये बात ये इसलिए कर रहा हूँ कि कश्मीर के इशू पे कश्मीरी जब तक वो नहीं करेंगे अपने काम को, इसमें हाथ नहीं बढ़ाएंगे, वो नहीं करेंगे, अपने बूट्स जो है वो ग्राउंड पे नहीं लाएंगे, तो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी सपोर्ट जरूर है, हमने मॉरली सपोर्ट भी किया है और हर तरह से सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन क्या हमने कश्मीरियों से ये पूछा है या कि कश्मीर आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे या वो आज़ाद रहेंगे? हम किस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं? हमें पता है कश्मीर शहर है पाकिस्तान की, और हमें पाकिस्तान ही की तरह कश्मीर से भी उतनी मोहब्बत है। हमें चाहिए कि कश्मीर के लोगों को, दोनों तरफ के कश्मीर के लोगों को, ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को, आज़ाद कश्मीर के लोगों को, इन टीम्स का, इन जो ग्रुप जो बन रही है, कमेटियां बन रही हैं, उसमें मैं चाहता हूँ कि उनकी ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, नहीं तो हम ऐसे ही लगेगा जैसे हम किसी के लिए फाइट कर रहे हैं। और वो जैसे यहाँ पे हमारे एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि भाई ये कश्मीर 2 दफा बिक चुका है, लेकिन भाई कश्मीर के लोगों को खुद भी अपने आप उठाना पड़ेंगे, अपने हाथ उठाना पड़ेंगे अपना हक लेने के लिए। तो मैं साहब थोड़ा सा टाइम की कमी, और यकीनन आपने सही इस पॉइंट को लिया है। कश्मीर के लोग यकीनन उठे हैं, कश्मीर के लोगों ने जितनी बहादुरी से मुकाबला किया है हम सब देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। और हम तारिक एक सेकंड होल्ड करें यहाँ पे। मैं पाकिस्तान की असेंबलीज में, पहली असेंबलीज में और आज की असेंबलीज में भी, प्रोविंशियल सेनेट और नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के लोगों को जो देखता हूँ, उनके सरनेम से अंदाजा होता है कि मेजॉरिटी, कुछ ज्यादा नंबर नहीं मैं दे रहा, अप्रोक्सीमेटली 20 से 30% लोग जो हैं वो कश्मीर के लोग हैं। सूबाई असेंबली में आप देखें, और ये जो पिछली हुकूमत नवाज शरीफ की थी, इसके बड़े बड़े जो हैं जो मिनिस्टर्स हैं और जो बड़े, वो सब कश्मीर के लोग हैं यार। इंतखाब वो एक अच्छी चीज है, वो हमारे सारे, एक सेकंड, हमारे सारे पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए वो उतने ही काबिल एहतराम है। लेकिन पाकिस्तानी है, मुझे बिल्कुल यकीन है। लेट्स मूव फॉरवर्ड सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड, टाइम कम है। बड़ी स्ट्रगल है, इतने लोग जी suffering from last 70 years and they जी struggling for their तनवीर चौधरी साहब अगर सुन रहे हैं तो वो बोल सकते हैं। शहजाद नजीर साहब हैं। तो इसका कोई कंक्लूजन, तारिक, कोई कंक्लूजन होना चाहिए। जी 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 नहीं कर सकते ऐसे, आप जी कंक्लूजन ये होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ऐड करना चाहिए उन लोगों को जो यहाँ पे कश्मीर के, ऑक्युपाइड कश्मीर के, और ये लोग उन्हें डेफिनेटली आप इस बात को इंडोर्स करें। बिल्कुल। मैं आखिर में चाहूंगा जी कि हमारे एग्जीक्यूटिव
पीरजादा साहब, नसीर पीरजादा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। वो अमूमन आखिर में बोलना चाहते हैं और यकीनन बड़ा उनका तजर्बा भी है मीडिया के साथ और न्यूज़पेपर में एक बहुत पुराना बड़ा नाम, हमारे मिरेकल मीडिया के चेयरमैन भी हैं। पीरजादा साहब, आपको आवाज आ रही? पीरजादा साहब को अनम्यूट करें जी। पीरजादा साहब अनम्यूट करें पहले जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तमाम सामाईन का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज के इस फोरम में साथ थे, और खुसूसी तौर पे कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान का। मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 67 ईयर्स हो गई है। इनमें 60 साल से मीडिया में अखबारात के जरिए, रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए जो कुछ देखा है, दो ही कौमों को हाथों से, जिनमें पत्थर और वो पत्थर चलाने वाली ज्यादा खवातीन, बच्चे, नौजवान, उनमें एक शेर मुझे आज भी याद आ रहा है, हाथों में पत्थर लिए शहजादियां कश्मीर की, हाथों में पत्थर लिए शहजादियां कश्मीर की, ढूंढने निकली हैं खुद आजादियां कश्मीर की। आप ये देखें, जो आज से पहले जितने जुल्म हो रहे थे, वो आज उनसे 200% ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, फलस्तीन में भी और कश्मीर में भी। जितनी एडवांस न्यूक्लियर हो रही है, उतने ज्यादा एडवांस उन पे मजालिम बढ़ रहे हैं। मैं अपनी तकरीर को बहुत शॉर्ट करूंगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जालिम को मजलूम जो है और ज्यादा मजबूत करता है। मजलूम जब तक जुल्म सहता रहता है ना, तो जालिम की और शय बढ़ जाती है, और मजलूम अब जब जालिम के सामने डट जाता है तो उसका जुल्म जो है ना अपने आप ही डट जाता है। माशाल्लाह कौंसल जनरल साहब ने डिटेल पढ़ी, बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप ये देखिए कि ये डिटेल में इजाफा कब हुआ है? आफ्टर 9/11 के इंडिया की मईशत कितनी मजबूत हुई है और हम कितना पीछे चले गए हैं। इसी तरह हमारी जितनी 60 साल की अगर आप पूरी देखें, तो हमारे जितने भी पॉलिसीज बनती रही हैं गवर्नमेंट की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर ही बनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इलेक्शन के टाइम आते रहे, ऑपोजिशन और जो हुकूमतें हैं वो सिर्फ एक कश्मीर की बेस पर इलेक्शन लड़ती रही हैं, और उसका रिजल्ट क्या आता रहा है। मेरा अपना मीडिया 20 साल से यहाँ है, हम कश्मीर पे और फलस्तीन के बारे में आर्टिकल लिखते हैं, एडिटोरियल लिखते हैं, लेकिन अभी बात की थी किसी ने, क्या जस्टिन ट्रूडो को या लिबरल गवर्नमेंट को नहीं पता कश्मीर में क्या हो रहा है? सब कुछ पता है। पंजाबी जो कहते हैं भोले बन जाते, मीसने बन जाते, सब कुछ पता है, सब एमपीओ को पता है। कश्मीर कोई छोटी मोटी स्टेट नहीं है, लेकिन दे डोंट वांट टू डू इट। क्या अफगानिस्तान और इराक पे जब हमला हुआ, 1 अरब लोग सड़कों पर आए थे, क्या रुक गए थे? आई वॉज इन अरब कंट्री, और 2 हमले मेरे सामने वहां हुए, दुनिया ने रोका, लेकिन जिसने करना होता हमला वो करके होता है। तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन इसका हल क्या है? OIC 58 कंट्री के एक इस्लामिक कंट्री है। जब पंचायत में बैठे सरबराह ही एक तरफ झुकाव करे और अपने इंटरेस्ट की वजह से, तो फिर बंदा वहां क्या कर सकता है? आप खुद समझदार हैं। अभी शाह साहब बोले थे हमारे वजीर खारजा, उनके साथ क्या हुआ और फिर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि मुसलमान के पास 3 ही दर्जे हैं, या वो हाथ से रोके यानी कि जिहाद करे, अभी कल किसी ने तकरीर ऑपोजिशन में कहा था, और या फिर जुबान से रोके उस जालिम को, या फिर दिल में बुरा चाहे। कम से कम हम ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी हैं, 2 काम तो कर रहे हैं ना। अल्लाह ताला हमें उन दोनों में शामिल करे। एक तो हम अपनी जुबान से जो कुछ अब बोल रहे हैं, और जो कुछ अभी हम साजिद अमीर साहब कर रहे हैं, वो
اور ایک ہم دل میں بھی برا چاہ رہے ہیں اور کم از کم کشمیر کے ساتھ یکجہتی کشمیریوں کے ساتھ دکھا رہے ہیں. تو اگر آپ اجازت دیں طارق کیانی صاحب، وائنڈ اپ کرنے سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں تاکہ ٹائم جو ہے ہمارا بچ جائے. دعا کے لیے سر، دعا کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، مگر ہمارے ساتھ شہزاد نذیر صاحب ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. پہلے میں نے عرض کیا تھا تو وہ شاید سن نہیں سکے تھے. شہزاد بھائی اویلیبل ہیں؟ بہت شکریہ نوید، طارق اور آنریبل کونسل جنرل صاحب. بس نہیں، میرے خیال میں اختتام کرتے ہیں. وہ کیسے کہتے ہوتے ہیں نا کہ اروندھتی رائے جس کو کہتے ہیں نا کہ ضمیر ہے انڈیا کا، تو اس کا ایک کوٹ میں اس وقت شیئر کرنا چاہ رہا تھا، وہ میں نے لکھ دی ہے. obviously سب لوگ اس کو پڑھ لیں گے. But the need of the time is we should unite and we should continue the struggle. اور میں صرف ایک چیز ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ CCMC کا پلیٹ فارم ونڈرفل، آپ سب لوگوں کا ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ود ان اے منتھ اس کو ایک ٹارگیٹ رکھا جائے ڈیلے کیے بغیر. ہمارے جتنے MLAs ہیں، MPs ہیں، ایک سیم میٹنگ ان کے ساتھ کی جائے، ان کو انوائٹ کیا جائے، اور جو لوگ شامل نہیں ہوئے یا ہوں گے ان کو ایکسپوز کیا جائے اور ان کے بارے میں سب کو بتایا جائے کہ ہم نے ان کو ریکویسٹ بھیجی اور وہ شامل نہیں ہوئے. آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ. آل دا MLAs MPs جو ہمارے لوکل ہیں، سری کے، لینگلی کے، ایبٹس روڈ کے، جو شامل ہو سکتے ہیں ان کو ضرور شامل کیا جائے. اور میں اس کشمیر کاسٹ کا حصہ تھا وہ، اور انشاءاللہ میں بالکل 100% with full capacity I'm with all of you. Thank you so much. تھینک یو سو ویری مچ شہزاد بھائی، بہت شکریہ. یقیناً ہم ایک سیمینار کریں گے جس میں ہم اپنے MPs اور MLAs کو انوائٹ کریں گے. ہمارا تجربہ، میں کبھی بھی پیسمسٹک نہیں ہوتا، مگر ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب 370 ریووک کرنے والا مسئلہ آیا تھا تو ہم لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پہ ان لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی. کسی ایک MP نے بھی کشمیر کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی تھی. ہمارے آن کیمرہ ہمارے پاس ریکارڈنگز ہیں کہ انہوں نے انکار کیا. MLAs جو اپنے، میں لوکل کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کوئی بات نہیں کی سوائے ایک MLA رچنا سنگھ کے. مگر ہم یہ کوشش پھر بھی کریں گے، کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارے نمائندے ہیں، ہمارے ووٹوں سے یہ آگے آتے ہیں، تو ان کو ہمارے کنسرنز کو بھی ڈیفینیٹلی دیکھنا ہوگا، ان کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا. میں آخر میں ایک چیز کونسل جنرل صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک کوشچن کی شکل میں ہوگی کہ اگر آپ اس کو دیکھیں ہمارے سامنے سر، ان جو کانفلکٹس ہیں ان کی ریزولوشن کے 2 چیزیں ابھی ریسنٹ ہسٹری میں ہم نے سامنے دیکھی ہیں. ایک جو چائنا کے ساتھ جو ڈسپیوٹ تھا انڈیا کا، انہوں نے اس کو کس طریقے سے سالو کیا. نیگوسیشن اور وہ جو ڈپلومیسی اور چلتی رہتی ہے، بیک ڈور وہ تو ہوتی رہتی ہے، مگر اس سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوا. دوسرا مسئلہ ہمارا ایک بہت چھوٹا ملک، بہت کمزور ملک آذربائیجان کا اور آرمینیا کا جو کانفلکٹ تھا نکورنو کارناباغ کے اوپر، اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کو بھی آخر میں لڑ کے اس چیز کو لینا پڑا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ بلکہ سب پارٹیسپینٹ اس کے بعد ہم دوبارہ کریں گے انشاءاللہ، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کو کوئی سولوشن کی طرف ہم پہنچ نہیں چکے کہ ہم نیگوسیشن 70 سال سے کر رہے ہیں. ہمارے پاس ریزولوشن یونائٹڈ نیشن کی موجود تھی جس پہ جو انڈیا نے پریزنٹ کی تھی، جس پہ ایگری تھے ساری دنیا، اس تک پہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو کیا ہم اب اس سٹیج پہ نہیں ہیں جہاں ہمیں آذربائیجان کی طرح یا چائنا کی طرح بڑھ کے اپنا جو حق ہے وہ لینا ہوگا؟ یہ سارا کچھ، اور میں چاہوں گا آخر میں اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں. آپ کا جو انیشیٹو ہے کشمیر کمیٹی کا، اس پہ ڈیفینیٹلی ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں. جس طرح سے آپ نے نام مانگے ہیں یقیناً وہ بھی ملیں گے. تو لاسٹ پہ میں چاہوں گا کہ آپ اگر کچھ فرمانا چاہیں تو وہ کلوزنگ ریمارکس ہوں گے ہمارے، اس کے بعد ہم پروگرام کو ختم کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی ونس اگین. اگر آپ یہ مجھ سے سوال آج سے کوئی 20-25 سال 30 سال پہلے کرتے تو میرا جواب غالباً فرق ہوتا. With nuclear weapons in our pockets, war is no longer an option. یاد رکھیے Azerbaijan, Armenia, they are not nuclear states. چائنا اور انڈیا کے درمیان میں جو ان کے پہاڑی علاقہ جات میں جو ان کی ریسنٹ کنفرنٹیشن ہوئی ہے، وہ بھی اسکرمش تھی، ایک جھڑپ تھی.
وہ بھی اس کو اس لیول تک نہیں لے جا سکتے جہاں پہ آپ جنگ کا اعلان کریں، اور جنگ سلوشن بھی نہیں. میں 3 سال ہندوستان میں بھی رہا ہوں، میری پوسٹنگ انڈیا میں بھی رہی. میں نے ہندوستانی انٹیلیجنسیا کو کافی معقول سمجھا، سننے والے لوگ ہیں، سمجھنے والے لوگ. انفارچونیٹلی جو یہ حکومت ہے، اس کی فلسفی اور اس کی اپروچ، میں نے اپنی ٹاک میں پہلے بھی کہا ہے، اٹ از لائک اے نازی اور اے فاشسٹ اپروچ. میں امید کرتا ہوں کہ ہندوستان کے جو سٹیزنز ہیں وہ اپنے رائے، اپنے ووٹ کے پاور سے کوئی ایسا سیٹ اپ لے کر آئیں جو امن، ترقی اور پراسپیرٹی اس خطے کے لیے لے کر آئے. امیجن کریں کہ اگر ہندوستان پاکستان کے حالات on a mutually respectable grounds, and I underscore mutually respectable grounds پہ حل ہوتے ہیں, with which is the most important thing is the within the wishes and the wills of the Kashmiri people. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان needs to go to the world. ہمارا بزنس ہمارے بارڈرز پہ ہی ختم ہو جائے گا. میں معاشیاتی بزنس، آج عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو اخباروں میں آئی ہے، اس کو آفیشیلی تو مجھے نہیں پتا چلا. یہ تو کشمیریوں کا ڈیسیجن ہے کہ انہوں نے کدھر جانا ہے. آزادی چاہیے، پاکستان کے ساتھ آنا ہے، وہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے. لائک آئی سیڈ، میوچولی ریسپیکٹیبل ٹاؤنز ہوں جس میں کشمیری پیپل، جو کشمیر کے لوگ ہیں، ان کی جو وش اینڈ ول کو سامنے رکھا جائے. I have no doubt in reiterating myself that war is no longer a solution for either Pakistan or for India, because the ramification of that war, اس کی قیمت نہ ہم ادا کر سکتے ہیں، نہ ہندوستان ادا کر سکتا ہے، اینڈ نہ دنیا ادا کر سکتی ہے، کیونکہ نیوکلیئر ایکسچینج کا امپیکٹ صرف ان دو ممالک کی حدود میں نہیں رہے گا. So negotiation on mutually respectable grounds with a government in India which consider India as not as Hindustan. India was a secular, democratic country. Now it is Hindustan, a non-democratic, non-secular country where the philosophy of Adolf Hitler is almost worshipped, and the strategies of his media minister Goebbels is in force to put a blanket over کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. یہ جو آپ کے سامنے وہ جو EU ڈس انفارمیشن لیب کے ڈاکیومنٹس نکلے، ویری رائٹلی سو، اس پہ بات ہی نہیں ہوئی، لیکن we tried to put it on the media. It came out in the media. The Kashmir Council or the Kashmir Coordination Council, whatever it is, we need to reorganize it. We need to put actual boots on the ground in a very systematic and a non-violent way, کہ ہم اپنا پوائنٹ بھی بنائیں، اپنا نیریٹو بھی کنوے کریں، اور وہ اگلے سنیں بھی. Wherever it is, I am always there for you. War is not a solution. Thank you. آج ایکچولی عمران خان کی اسپیچ میں I heard that speech, he did say that کہ اگر کشمیر ہو جائے تو وہ he will let them decide کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ کنٹری بنانی ہے. And I think that is such a smart approach. جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا پاکستان کے ساتھ مل جائے، پاکستان کے ساتھ مل جائے، تو لوگ ہمیں پھر باعث سمجھتے ہیں. And they think that we have our interest. That's why we are saying that. And we should be saying کہ کشمیریز کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے. The right of self-determination according to the UN resolutions belong to the Kashmiris, not to anyone else. Right. That's right. Thank you so very much, sir. اور ان کوششوں میں آپ کو یہاں کے جو مسلم میڈیا ہے اس کی کمپلیٹ سپورٹ آپ کے حوالے کرتا ہوں. آپ کو ہوگی ہماری طرف سے جہاں تک بھی ہم جا سکتے ہیں. مگر میں چاہوں گا آخر میں پیرزادہ صاحب اگر مختصر سی دعا کرائیں اور یہیں پہ ہم ختم کریں گے پروگرام. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ سب کا اتنا ٹائم دینے کے لیے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ فیوچر میں بھی ہم بات کرتے رہیں گے. اور پیرزادہ صاحب دعا سے اختتام کریں. چلیں جی، دل سے میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ دل سے دعا مانگنی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی دعا کو قبول کرے، کیونکہ تارکین وطن کے پاس یہی ایک ویپن سمجھ لیں، یہی ایک
اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ. چلے سب سے پہلے الحمد شریف سب لوگ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع ابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما. یا اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے مسلمان مرد عورت بچے شہید ہو چکے ہیں وفات پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک آج کل ساری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے. یا اللہ پاک اس کرونا وائرس سے دنیا میں جہاں جہاں مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی تو مغفرت فرما. اور اس کرونا وائرس سے جتنے بھی ہسپتال میں زیر علاج ہیں گھروں میں زیر علاج ہیں یا اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما. جن لوگوں کے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو یا اللہ پاک صبر و جمیل عطا فرما. یا اللہ پاک آج اس زوم میٹنگ کے ذریعے جو بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ پاک ان کی جائز مشکلات کو یا اللہ پاک آسان فرما. یا اللہ پاک ان کے جتنے بھی خاندان میں عزیز و اقارب بالخصوص والدین بچھڑ چکے ہیں اگر اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو خاندان میں کوئی بچھڑ چکا ہے یا اللہ پاک ان کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ان کو صبر و جمیل عطا فرما. یا اللہ پاک آج کا یہ کینیڈین مسلم میڈیا کی جانب سے جو فورم کشمیر کی یکجہتی کے لیے بلایا گیا ہے یا اللہ پاک اس کو قبول فرما. یا اللہ پاک کشمیر کے مسلمانوں پر نہتے مسلمانوں پر جو ظلم اور بربریت عرصہ دراز سے ہندوستان کی سیکورٹی فورسز نے کیا ہوا ہے یا اللہ پاک ان کو جلد نجات عطا فرما. یا اللہ پاک ہم تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت عالمی جتنی بھی سربراہی کانفرنسیں ہوتی رہیں جتنی بھی اس وقت اقوام متحدہ کے جتنے بھی اجلاس ہوتے رہے کوئی سنوائی نہیں. جب منصف ہی ایک طرف ہو جائے جب منصف ہی فیصلہ نہ کر سکیں تو ہم کس سے انصاف مانگے. پھر بالخصوص اس وقت جو حالات دنیا کے ہیں یا اللہ پاک ہم آخر تو سے ہی مدد مانگتے ہیں. یا اللہ پاک ان 1 لاکھ سے زائد شہیدوں کا واسطہ جو کشمیر میں شہید ہو چکے ہیں یا اللہ پاک ان کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ان خواتین کی جن کی عصمت دری ہوئی ہے ان بیٹیوں کی جن کی عصمت دری ہوئی یا اللہ پاک ان کی عصمت دری کا واسطہ ان پر رحم فرما. ان پر رحم. یا اللہ پاک ظالموں کو تو ہی سزا دے. یا اللہ پاک ہم بے بس ہیں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور جو کچھ ہمارے بس میں ہم وہ کر سکتے ہیں لیکن کن فیکون تو ہی کرنے والا ہے. یا اللہ پاک تو رحم فرما. فلسطین کے مسلمانوں پر بھی رحم فرما. وہ بھی بیچارے نہتے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے ظالموں اسرائیلیوں کا مقابلہ کرتے. ان خواتین کی طرف دیکھ کر یا اللہ پاک ہمیں رو رہا تھا. ان اسرائیل جو اتنا طاقتور ہے وہ انڈیا جو اتنا طاقتور ہے کشمیریوں کے آگے یا اللہ پاک تو کہہ دے ان پر ان کے ظلم ختم فرما. یا اللہ پاک پاکستانی افواج جس جمع مردی سے مقابلہ کر رہی ہے کشمیریوں کے آگے تو انہیں اور ہمت دے. پاکستانی قوم پاکستان کی حکومت اور ہم سب جس طرح دعا گو ہیں جو کچھ ہم سے ہو رہا ہے یا اللہ پاک ہمیں ہمت عطا فرما. یا اللہ پاک تو ہم سب پر رحم فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش رحمتک یا رحم اللہ. آمین آمین. بہت شکریہ جی بہت شکریہ اور خاص خصوصی شکریہ آج کے پروگرام کے لیے جی حارث حفیظ صاحب کا جنہوں نے یہ ساری ٹیکنیکل ہمیں پرووائڈ کی آج کے پروگرام کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا.
हारिस बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज सबको। आप कुछ फरमाना चाहते हैं जी? जी सबसे जी खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हामी और नासिर। Allah Hafiz.